Hello everyone, welcome back to our channel, and from today we are going to start a very important segment जो upcoming exams के लिए is very important, either be it RBI exam or NABARD exam or any other exam, because we are starting with September 2025 current affairs and this is part 1. In this we are going to cover banking and finance, and this portion is also not complete and we have to complete our banking and finance in part 2 as well, because banking and finance हम काफ़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी डिटेल में करते हैं, as it is very important for our examination point of view. Now this session is specifically is going to be very important for RBI grade B aspirants and also for NABARD grade A aspirants. So let us start with this topic, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe. Also you can join our Telegram channel with the link given in the description below. And without any further delay, let us now start with our MCQs. ये हम MCQs format में करेंगे so that it's easy to learn, easy to revise and easy to understand. Right, so quickly let us start with our first MCQ that says, which port will become the first Indian port with a green hydrogen fueling station as per recent MOU? So recent MOU has been signed, and first Indian port, which port has become the first Indian port with a green hydrogen fueling station? So that is VO Chidambaram Port, Tuticorin. So VOC Port, Tuticorin is the right answer. So B is the right answer. Right. So please remember the green hydrogen fueling station, the port that has become with green hydrogen fueling station, that is VOC Port. Now NTPC Energy Green Energy Limited, that is NGEL. So please also remember this if it is written NGL. So in exam also it may be written as NGL. So you have to guess what is NGL. तो आपको full form पता होना चाहिए. So it is NTPC and Green Energy Limited. So NGEL signed an MOU with which authority to set up this green hydrogen fueling station? So the MOU was signed with VOCPA, that is VO Chidambaram Port Authority, and then a green hydrogen fueling station has been set up in VO Chidambaram Port, Tuticorin. So please remember this, that NTPC Green Energy Limited has signed this MOU, that is NGEL. Right. Now, Bharat Heavy Electricals Limited recently signed a 10-year MOU with which company to develop hydrogen fuel cell based trains for India? So to develop hydrogen fuel cell based trains for India, BHEL or BHEL has signed 10-year MOU with Singapore Horizon Fuel Cells Technologies. So B is the right answer. Horizon Fuel Cells Technologies सिंगापुर के साथ MOU साइन किया है BHEL ने to develop hydrogen fuel cell based trains for India. Now, NABARD is set to launch which digital platform to enhance the competitiveness of regional rural banks? So I have taught you this as well कि रीजनल रूरल बैंक्स के केस में वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पर हमने आरआरबीज़ के नंबर को रिड्यूस करा है फ्रॉम 43 to 28. राइट नाउ, टू इन्हांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बी इज़ द राइट आंसर, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ द पॉलिसी ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of May 2025. So it's already effective. So 1st May 2025, the date also you have to remember this, and the RRBs are made from 43 to 28. So C is the right answer. Next, how much monetary penalty has RBI imposed on PhonePe for non-compliance with PPI regulations? So PhonePe के ऊपर penalty charge हुई है, and the monetary amount of that penalty is 21 lakh rupees. So B is the right answer. Which fintech company has Amazon India acquired to expand its digital lending business? तो कौन सी fintech कंपनी को Amazon India ने acquire किया है ताकि digital lending business को expand किया जा सके? तो right answer is Axio, that was formerly called as Capital Float. So Axio and Amazon आपको याद रखना है, Axio and Amazon. What is the estimated value of this acquisition? तो जो acquire किया है उसकी value is around $200 million US. So C is the right answer. As it is a very quick revision session, so I am just moving forward with MCQs. I hope this will be a quick revision session for you all and there won't be left anything
to study in current affairs after this. Which state remains the largest by portfolio outstanding in microfinance institutions lending? तो microfinance institution lending में कौन सा state largest है by portfolio outstanding? So the right answer is Bihar. So B is the right answer. Now, Bharat Forge has signed an MOU with which UK-based company for deployment of UAVs in India? So Bharat Forge has signed MOU with Windrazers, and this is an UK-based company, so that deployment of UAVs can take place in India. Now, how much financial support has IFC pledged for e-bus rollout in India? So IFC यानी International Finance Corporation is pledging for e-bus rollout. Right, तो उसके लिए the for e-bus rollout the financial support that IFC has provided is $137 million. So 137 is the right answer. Now this $137 million would be given to two companies. To one it would be given $100 million and to second it would be given $37 million. So the primary, now which company is the primary beneficiary of this IFC's e-bus investment in India? So the company who will be getting $100 million, the primary beneficiary of this investment is JBM, that is JBM Ecolife. So B is the right answer. Here you can see that $100 million will be given to JBM, that is JBM Ecolife, and $37 million would be also given to Green Cells. So the total investment that IFC is going to do for e-bus rollout is $137 million. Kuch investment are very important for us to remember, because first, it is recent. It is from recent month September. An exam is going to be conducted next month or after next month, right? And second of all, it is given for e-bus rollout. So it becomes very important. And IFC in itself is a very important organization. So you have to remember this. And also it is important because it is IFC's largest global e-bus investment, and it is first in e-bus investment of IFC in Asia. So that is why it is very important for us to remember that $137 million investment IFC is doing in India for e-bus rollouts, and the primary beneficiary is JBM Ecolife. Now, deployment plan is what? So 4,000 e-bus and charging stations across 39 municipalities would be there, and states जो covered हैं वो है महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी and Delhi. Government also have target for e-bus rollout. So India has 2 million buses in operation, and our target is कि हमारी 40% e-bus penetration हो by 2030. We want 40% of e-buses in India by 2030. So this is the right answer. Now another important question on funding by ADB, that is Asian Development Bank. So how much funding has Asian Development Bank committed for climate resilient tourism development project in Uttarakhand? So Uttarakhand के लिए अभी in today's class we are going to learn around 4 to 5 fundings. Please note it down separately if you are having confusion, or I'll provide you the PDFs definitely, so you can see there also. But you have to remember all these 4-5 fundings. These are very important. So first funding we remembered $137 million by IFC for e-bus rollout. Second funding we are seeing as ADB का funding for Uttarakhand, and that is $127 million. Right, so please remember this. और IFC का था $137 million for e-bus rollout for e-bus, and here it is for Uttarakhand. Now TCIL यानी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड. सो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है विथ विच बैंक टू स्ट्रेंथन IT सॉल्यूशंस. सो TCIL हैज साइंड MOU विथ पंजाब नेशनल बैंक to strengthen IT solutions. So please remember this, that TCIL has signed MOU with Punjab National Bank to strengthen IT solutions. TCIL is a PSU under which ministry? So it is a PSU under Ministry of Communications. So B is the right answer. And also it's understood because अगर आपको फुल फॉर्म पता है then it's easy. TCIL में C stands for communication and it is Ministry of Communication, but for that आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए because एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं आता है. एग्जाम में it will only ask TCIL. So please know that TCIL stands for Telecommunication Consultants India Limited. Now, Israel Chemicals Limited has partnered with which Indian company to launch soil and crop health solutions? So Israel
केमिकल्स लिमिटेड ने किस इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च क्रॉप एंड soil health solutions? Again, a very important question, also from NABARD perspective, a very important question. So the Israel Chemical Limited has signed partnership with Bioprime Agri Solutions Private Limited. So B is the right answer. Next, Air India has signed a code share agreement with which national airline of which country? So Air India has signed a code share agreement with Kazakhstan. So Kazakhstan, B is the right answer. And Air India ने sign किया है कजाकिस्तान के साथ code share agreement, and the name of Kazakh airline partnering with Air India is Air Astana. So B is the right answer. Now, how much loan has World Bank approved for shore project in Tamil Nadu and Karnataka? So again, another funding question. First we हमने पढ़ा था IFC funding $137 million for e-bus rollout. उसके बाद we studied ADB funding of $126 million for Uttarakhand. Now we are studying World Bank funding of $212 million for shore project in Tamil Nadu and Karnataka. Right, so please remember this. और आगे भी जो हम fundings याद करेंगे, I'll just make you revise the previous fundings. So shore project stands for what? So shore stands for, here another question is there on shore project full form. So shore project stands for strengthening coastal resilience and the economy. So B is the right answer here. But what is important is that you also have to remember the full form. So ऐसे जो full forms है, they are very important for exams, and especially in NABARD it is very important. Shore full form. So shore full form is strengthening coastal resilience and the economy. So for coastal resilience and economy को strengthen करने के लिए this project World Bank is giving the funding that has to be implemented in Tamil Nadu and Karnataka. So funding of $212 million. Now, the shore project is a part of larger umbrella initiative worth how much money? So shore project is a larger part. Okay, so it's a part of $850 million project in which $212 million are being provided by World Bank for Tamil Nadu and Karnataka. The tenure of this project loan from World Bank that's being received is of 23 years, including a 6.5-year grace period. And which of the following is a key intervention under the shore project? So let us read this. So shore project के अंदर क्या होने वाला है? Shore project के अंदर conservation of 30,000 hectares of seascapes through mangrove plantation and sand dunes restoration will take place. So shore project is relating for coastal resilience. Okay, so coastal resilience की जब हम बात कर रहे हैं, it is on coastal resilience, and what is very much important in coastal areas and coastal resilience, that is mangroves. So that is why the shore project is on conservation of 30,000 hectares of seascapes through mangrove plantations and sand dunes restoration. So A is the right answer. Now next question is, PhonePe has partnered with which financial institution to launch digital first Udyam Assist platform for MSMEs? So PhonePe has partnered with SIDBI ताकि डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सके फॉर MSMEs. सो बी इज़ द राइट आंसर. ऑल्सो रिमेंबर दिस कि अगर ऑप्शन में आता है कि सिडबी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच पेमेंट एग्रीगेटर टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म फॉर MSME एंड ऑप्शंस आर फोन पे, गूगल पे, भारत पे, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, देन द राइट आंसर वुड बी फोन पे. सो आपको दोनों तरीके से याद करना है. These MCQs are provided to help you to understand how questions can be framed, but questions ऐसे भी frame हो सकता है that phone पे could be the answer of this question. Then the Udyam Assist portal platform primarily facilitates what? So हम यहाँ बात कर रहे हैं digital first Udyam Assist platform की, and the Udyam Assist platform is primarily facilitating what? Digital first registration and formalization of informal micro enterprises. Udyam Assist portal यानी कि हम चाहते हैं कि digital first registration हो and we want to make formalization of informal micro enterprises. We want more formalization. We want to मूव टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन. जो कि इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेज है, तो उसके लिए हमको और ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना है.
Now, next question is, which bank has launched digital loan against mutual fund facility in partnership with Arc Neo Financial Services, which operates digital platform, that is Dhan LAP. So, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद अर्क न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज? सो दैट इज साउथ इंडियन बैंक. सो सी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में दैट इज 50% एंड द लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स इज 70%. बिकॉज डेट म्यूचुअल फंड्स आर कंपेरेटिवली ऑन अ सेफर साइड, सो इसलिए उनका ज़्यादा है. एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर कंपेरेटिवली रिस्की, सो 50% इज ऑफ equity mutual funds. Then Bandhan AMC is asset management company, has received SEBI approval to launch which investment platform? So Bandhan AMC has received SEBI approval to launch Arudha SIF investment platform. So Arudha SIF is the right answer. Now, Sohan Lal Commodity Management Limited has partnered with which bank to offer unified collateral management services? So, Sohan Lal Commodity Management Limited ने partnership की है IDBI and Punjab and Sindh Bank के साथ to offer unified collateral management services. So, B is the right answer. The current account deficit in Q1 of financial year 2026, what percentage of India's GDP? So current account deficit was 0.2% of India's GDP. And one more question is there, आगे हम चलेंगे, so I'll tell you that उस टाइम पे. So अभी just remember कि that 0.2% is the current account deficit in Q1. Bank of Baroda has partnered with which institution to launch MSE Spice scheme? So MSE Spice scheme को launch करने के लिए Bank of Baroda ने partnership की है with SIDBI. So B is the right answer. Next is, as per SEBI's 2025 September amendment, what is the revised minimum investment requirement in privately placed infrastructure investment trusts, that is InvITs? So InvITs में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है एंड नाउ इट इज़ 25 लाख रुपीज़. सो सी इज़ द राइट आंसर. नाउ as per SEBI's 2025 update, which entities are covered under special delisting framework? Now questions are on delisting framework. So first let me tell you what is delisting framework and then we will come back to MCQs. So SEBI PSU delisting update. तो delisting क्या होता है? delisting मतलब जो लिस्ट हुई कंपनीज है उनको अब हमें रिमूव करना है, डीलिस्ट करना है. सो व्हेन कंपनी शेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अब उन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता, सो दे आर डी लिस्टेड. पहले लिस्ट हुई शेयर्स, जब शेयर्स लिस्ट हुए तो वो हो गया लिस्टिंग. अब उन शेयर्स को हम एक्सचेंज से हटा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हैं, सो दैट इज़ डी लिस्टिंग. बट वॉट यूज टू हैपन वॉज दैट इन डी लिस्टिंग when government wanted to exit from the stock market, so delisting rules will apply. Obviously अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को बाहर जाना है स्टॉक मार्केट से, so delisting rules will apply. But those delisting rules made the delisting very very difficult. उसकी वजह से क्या होता था कि delisting नहीं हो पाती थी या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी. सो इट टुक टू मच टाइम. और ये टाइम क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस जैसे कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका 2/3 अप्रूवल चाहिए तभी डिलिस्टिंग हो सकती है. प्राइस वाज डिसाइडेड बाय रिवर्स बुक बिल्डिंग, यानी कि शेयर होल्डर्स अपनी सेलिंग प्राइस को बिड करेंगे, देन इफ़ गवर्नमेंट एक्सेप्टेड तो उसके बाद ये आगे डीलिस्टिंग की प्रोसेस बढ़ेगी. एंड इसके वजह से डिलेज एंड प्राइस डिस्प्यूट्स होते थे. Right. So now what change have been done? सबसे पहले please remember this, that the change have only been done for those PSUs where government is already owning more than 90%. So this is very important, that some relaxations have been done for PSUs where government already owns more than 90%. Now there is no need for 2/3 shareholder approval. So पहले the condition was कि 2/3 shareholder का approval चाहिए, then only delisting can happen, right? But now this provision is removed, that 2/3 shareholder का approval की ज़रूरत नहीं है. So what will happen now? तो अब नया प्राइसिंग रूल निकल कर आया है. पहले कॉम्प्लिकेटेड एवरेज लेते थे 60 डेज़ का, फिर 26 वीक का, फिर हाईएस्ट प्राइस निकालते थे, बहुत कुछ होता था. बट नाउ अब आपको सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखनी है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स. फर्स्ट इज़ फिक्स प्राइस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ फ्लोर प्राइस. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि गवर्नमेंट अब एक फिक्स प्राइस हो गया है कि जो फ्लोर प्राइस होगा उससे 15% ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना है, एंड देन
delisting can happen easily. Now the floor price will be how it will be decided. So it will be highest among 52-week average price, highest price in last 26 weeks, and statutory calculation will take place. यानी जो भी प्राइस 52 वीक्स का एवरेज निकाला तो उसमें जो एवरेज प्राइस आया है 52 वीक्स में या लास्ट 26 वीक्स में क्या हाईएस्ट प्राइस आया है, इन सारी प्राइस को कंपेयर करा, इसमें से जो भी प्राइस सबसे ज़्यादा है, जो भी प्राइस हाईएस्ट है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज फ्लोर प्राइस, एंड इस फ्लोर प्राइस से 15% ज़्यादा government must pay, and then delisting can happen easily. Now shareholders will get 1 year to sell their shares after delisting. अगर वो नहीं बेचते हैं 1 साल के अंदर भी तो कंपनी डिपॉजिट करेगी मनी विद स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 days and kept for 7 years. Investor can still claim later, so that is not a problem. But कंपनी डिपॉजिट कर लेती है मनी विद स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 days. Right. So here we were seeing कि as per SEBI update which एंटिटीज़ आर कवर्ड अंडर स्पेशल डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क. तो इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या कवर्ड है, वो PSU सिर्फ जो 90% से ज़्यादा जिनके पास गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है. सो सी इज़ द राइट आंसर. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नथिंग, जस्ट अ स्मॉल अपडेट. आई मस्ट रिपीट एंड टेल यू सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट. सो डीलिस्टिंग का फ्रेमवर्क आया है उन शेयर होल्डर्स के लिए जहाँ पर 90% से ज़्यादा गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है. राइट. पहले बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता था, 2/3 शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए होता था, एंड इट यूज टू टेक अ लॉट of time. Now what has happened, now it has changed. It is now following a fixed price system where government will pay a 15% higher price than the floor price. The floor price will be the highest price among 52 weeks average, or the highest price among 26 weeks, the last 26 weeks, or a statutory calculation would be done. इन सब में से जो भी highest price होगा that would be treated as floor price, and floor price का 15% ज़्यादा government has to pay. So this change have been done. Now under SEBI's new rule, at what price can PSUs delist their shares? तो PSUs किस प्राइस पे delist कर सकते हैं? At par value, at market determined price, at a fixed price, at least 15% above. So C is the right answer. At least 15% above the floor price. So C is the right answer. I hope you are understanding what it is. It is not confusing at all, and I hope I made it very clear. Now the next question is, which bank signed an MOU with government of Rajasthan committing 21,000 crore investment under Rising Rajasthan initiative? So the right answer is Punjab National Bank. B is the right answer. So next question is, which state remained the largest market for small business credit with rupees 6 lakh crore in outstanding credit as per SIDBI CRIF high mark report? तो एज पर दिस रिपोर्ट कौन सा स्टेट का लार्जेस्ट मार्केट है फॉर स्मॉल बिजनेस क्रेडिट विद 6 लाख करोड़? सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र. नाउ विच स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज इन आउटस्टैंडिंग स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो? सो दैट इज उत्तर प्रदेश. एंड मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपोजर जो है, जो हम बोलेंगे कि एक बिजनेस जो है वो एक स्मॉल बिजनेस है, सो द क्रेडिट एक्सपोजर इफ इट इज़ लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ और अप टू 5 करोड़ रुपीज़, वी विल से दैट इट इज़ अ स्मॉल बिजनेस एज पर SIDBI CRIF study. Right. Now, who launched the special edition comic book Sibyl की कहानियाँ? So Sibyl की कहानियाँ comic book is launched by TransUnion Sibyl. So B is the right answer. Who launched RBI Open House initiative? And what is the aim of this open house? So RBI के एक open house initiative start हुआ है, RBI में open house, and that initiative is launched by RBI Governor Sanjay Malhotra. Now what this RBI open house will do? तो open house क्या करेगा? जो सारे current या retired एम्प्लॉयज़ है, बोथ करेंट एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड. तो जो भी करेंट या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर कोई भी इंटरेक्शन करना है विद गवर्नर बिना गवर्नर के प्रायर अपॉइंटमेंट के, तो वो इस ओपन हाउस में कर सकते हैं. ड्यूरिंग RBI ओपन हाउस एम्प्लॉयज़ कैन इंटरेक्ट विद गवर्नर विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट. सी इज़ द राइट आंसर. नाउ at which time or which days they will be able to do so? So ये open रहेगा on working days between 10 AM to 10:30 AM. Yes, between 10 AM to 10:30 AM. So B is the right answer. This open house will be working on working days between 10 AM to 10:30 AM. Next is, which company has launched claim
has launched Claim Setu. So Claim Setu launch किया है Policy Bazaar for business ने. So please remember this, that Claim Setu has been launched by Policy Bazaar for business, and it is for what? It is for group health insurance claims. So C is the right answer. Claim करना है तो group health insurance claims you can just relate and learn. Next is, which fintech startup recently got NPCI approval as UPI third party पेमेंट प्रोवाइडर, दैट इज ट्रैप. सो कौन से फिनटेक स्टार्टअप को भी NPCI का अप्रूवल मिला है टू एक्ट एज UPI ट्रैप, दैट इज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर. सो द राइट आंसर इज Viona Fintech. So C is the right answer. Reliance Intelligence has partnered with which company to form a 70:30 joint venture? So Reliance Intelligence has partnered with Meta, that was formerly called as Facebook. So Meta के साथ Reliance Intelligence ने partnership की है to form a 70:30 joint venture. Now again a funding question that says, which organization has approved a $125 million loan for Assam urban infrastructure? So this is by Asian Development Bank. Let us just revise our previous fundings. So IFC $137 million loan for e-bus. Then ADB, how much? 126 for Uttarakhand. Then it was World Bank 212 for shore project. Now it is again ADB 125 for Assam infrastructure. So ADB 126, ADB 125, please remember, for Uttarakhand and for Assam. Which platform has launched loan against mutual funds projects? So loan against mutual funds products have been launched by PhonePe. So C is the right answer. And which NBFC is PhonePe partnering with for this loans against mutual fund, that is LAMF? So right answer is DSP Finance. And the maximum credit limit that will be offered again under this LAMF, that is loan against mutual fund, so that is 2 crore rupees. So C is the right answer. Now the next question is on Swagat Fan. So under Swagat Fan the KYC validity is extended to, so KYC validity को extend कर दिया है. पहले it was 3 years and now the KYC validity has been extended to 10 years. This is very important question. I'll explain you the Swagat Fan in detail. First let us just see MCQs, and which of the following is a feature of Swagat Fan? Actually let me just explain you and then you will be better able to answer that question. So Swagat Fan, सबसे पहले you have to remember its full form. Swagat Fan full form is very important. Swagat Fan stands for single window automatic and generalized access for trusted foreign investors. यानी now you are understanding that this is for foreign investors and this is something कि single window automatic, यानी उनको काफ़ी कुछ easy मिल रहा होगा, कुछ उनके जो conditions है वो relax किए गए होंगे. It is now made single window automatic and generalized access, यानी उन्हें कुछ चीज़ का access अब मिल रहा है, generalized एक्सेस मिल रहा है फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिनको हम ट्रस्ट कर रहे हैं. तो हमको फुल फॉर्म से इतना समझ में आ रहा है. नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज़. एक नया रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है जो सेबी ने निकाला है, जो कि ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड, सेंट्रल बैंक्स एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज. सो दीज आर आर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो दिस फ्रेमवर्क हैज़ बीन laid out by SEBI aiming at trusted foreign investors, and this is to design, simplify investments in India and make process more investor friendly. Okay. नाउ अभी क्या होता है, अभी KYC बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स उनको रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं, पेपर वर्क्स होते हैं एंड फ्रिक्वेंटली KYC रिव्यूज़ किए जाते हैं. एवरी 3 to 5 years KYC रिव्यूज़ वर डन, बट नाउ इट इज़ सेट कि KYC का रिव्यू किया जाएगा. द KYC वैलिडिटी इज़ एक्सटेंडेड टू 10 years. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ that eligible categories of स्वागत फाइज इज़ व्हाट. सो सबसे पहले ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमने बात की, सेंट्रल बैंक, सोवरेन वेल्थ फंड्स, इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एंटिटीज़ जो कि 75% ओन्ड है या कंट्रोल्ड है बाय दीज एंटिटीज़. सबसे पहले वी आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वी मीन बाय ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स, राइट. ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स की डेफिनेशन में क्या क्या है? नाउ अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड पब्लिक रिटेल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ट्रस्ट ओपन टू रिटेल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टिंग प्रोप्राइटरी फंड्स,
पेंशन फंड्स रेगुलेटेड इन देयर होम जुरिस्डिक्शन. ये सारी एलिजिबल कैटेगरीज हैं. लाइक वी आर एक्सप्लेनिंग कि ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स में व्हाट ऑल वी आर इंक्लूडिंग. नाउ व्हाट आर रिलैक्सेशंस जो इनके लिए किए हैं. सो सबसे पहला रिलैक्सेशन है दैट दे कैन रजिस्टर एज फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर एंड विदाउट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स. उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है एंड वो लोग ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन इज दैट पहले होता था कि अभी भी होता है बट फॉर देम इट इज़ रिलैक्स नाउ कि 66% इन्वेस्टमेंट करना होता है इन एलिजिबल अनलिस्टेड एसेट्स अंडर FVCI रूल्स यानी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रूल्स. तो इन रूल्स के अंदर 66% इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी डन इन एलिजिबल अनलिस्टेड एसेट्स. तो नाउ दे आर ऑल्सो एग्जाम्ड फ्रॉम डूइंग सो. थर्ड इज़ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है दिस वी हैव अंडरस्टूड कि 10 ईयर्स कर दिया है, 3 ईयर्स से द KYC वैलिडिटी. फोर्थ इज़ कि 50% एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन कैप होता है NRIs के लिए, OCIs के लिए, रेसिडेंट इंडियंस के लिए, बट ये कैप से उनको आज़ादी दे दी है. तो एग्जाम्शन फ्रॉम दिस 50% एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन कैप फॉर NRIs, OCIs एंड रेसिडेंट इंडियंस. सो ये एग्जाम्शन भी दे दिया है. एंड फिफ्थ इज दे कैन यूज सिंगल डीमैट अकाउंट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट्स दैट इज FPA, FBCI और अदर यूनिट्स. तो वो एक सिंगल डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए. दिस इज़ जस्ट रिपीटेड पार्ट ओनली. ट्रस्टेड इन्वेस्टर कैटेगरी में ये आता है. देन सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, 1 डीमैट अकाउंट वुड बी देयर, 50% वाला रूल रिलैक्स कर दिया है एंड KYC की साइकिल को बढ़ा दिया है फ्रॉम 3 to 5 years to 10 years. Now let us see the MCQ and it would be easy to solve. सबसे पहले the KYC validity is extended to 10 years. देन फीचर क्या है, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, राइट. 1 डीमैट अकाउंट कर दिया है, राइट. 50% वाला जो रूल था वो रिलैक्स कर दिया है फॉर ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स. सो दिस इज ऑल्सो राइट. सो आंसर इज D, ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्वागतफाई न्यूज़ एंड वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज yes. So as of financial year 2026, the cross-border UPI is live in how many countries? So cross-border UPI is now live in 7 countries: UAE, Nepal, Bhutan, Singapore, Mauritius, France and Sri Lanka. So 7 countries में अभी हमारा cross-border UPI is working. Now the next question is on index options. Okay, it is a very interesting news. So let me just take you to the news and then we'll come back on MCQs. So what has SEBI done? So SEBI ने limits introduce करे हैं on how much traders can buy and sell index options during a single day. Right. तो सबसे पहले क्या होता था? First of all, it is effective from 1st of October 2025, that is today itself. So today is 1st of October 2025 and it is effective from today. Now पहले क्या होता था, लिमिट नहीं थी कि ट्रेडर्स कितना बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं इंडेक्स ऑप्शंस ड्यूरिंग अ सिंगल डे. बट नाउ लिमिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड and also penalty would be there and penalty would apply from 6th of December. Now it was very important because SEBI पहले positions check करता था only at end of the day and इसके वजह से traders could take huge positions during the day which could make the market unstable. For example, on option expiry days some traders could manipulate prices or cause sudden jumps and drops. So therefore there was a need कि SEBI limit करे कि कितना traders can buy and sell index options during a single day and SEBI wants to protect small investors. तो कुछ limits लगा दी गई हैं. You just have to remember the limits. So first is net इंट्राडे लिमिट लगा दी है दैट दे ईच ट्रेडर और एंटिटी कैन होल्ड अप टू 5000 रुपीज़ करोड़ वर्थ ऑफ पोजीशंस एट अ टाइम. सो सबसे पहली लिमिट है नेट इंट्राडे लिमिट दैट इज़ 5000 करोड़ रुपीज़. फिर ग्रॉस इंट्राडे डे लिमिट इज़ 10,000 करोड़ रुपीज़ फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस. First, net intraday limit is 5,000 crore rupees. Second, gross intraday limit is 10,000 crore rupees. फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी कि पहले वो जैसे एंड ऑफ डे में चेक कर रहे थे बट नाउ इट विल चेक पोजीशंस मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे. एंड जो बिजी टाइम होता है ट्रेड का दैट इज़ 2:45 PM to 3:30 PM. तो एक चेक उस टाइम पे ज़रूरी है. सो 1 check would be done during this time. Right. Now from 6th of December 2025, if traders will breach limits on expiry dates, they may have to pay penalties on extra deposits. So extra exposure is allowed. Traders can take more positions if they have more cash or securities as collateral. So that is allowed. But the Exchange and Clearing Corporation will release guidelines on how monitoring works in 15 days. So that is not a problem.
Now our MCQ says that this monitoring framework will come into effect from 1st of October 2025. The net intraday position limit is 10,000 crore rupees. The gross intraday position limit is this is wrong. This is 5,000 crore rupees. So gross intraday position limit is 5,000 crore rupees. The net intraday position limit is, I think it's, oh, it's not wrong. I'm sorry for the confusion. Yes, I'm sorry. It's right. Net intraday position limit is, yes, 5,000. I'm really sorry for the confusion. Yes, net intraday position limit is 5,000 and the gross intraday position limit is 10,000. So C is the right answer and here B is the right answer. Right. And how often will stock exchange monitor these positions? So at least 4 times in a day, and one check is compulsory in 2:45 to 3:30 because this is the busiest time. तो 4 checks तो करनी है एटलीस्ट और 1 check इस टाइम पे करना है. So C is the right answer. Right. Yes. Now from which date are NPCI's new UPI transaction limits are effective? तो UPI की न्यू ट्रांजेक्शन लिमिट्स आई हैं बट फॉर पर्सन टू मर्चेंट्स. दीज लिमिट्स आर नॉट फॉर पर्सन टू पर्सन. अभी अगर हम सब UPI यूज़ करते हैं, वी ऑल यूज़ UPI, सो अभी द लिमिट ऑफ सेंडिंग मनी फ्रॉम UPI इज़ 1 लाख रुपीज़. आफ्टर 1 लाख रुपीज़ वी कैन नॉट सेंड. वो आ जाता है कि नाउ यू हैव ब्रीच द डेली लिमिट. राइट. नाउ दिस जो लिमिट बढ़ाई है ट्रांजेक्शन लिमिट, दिस लिमिट हैव बीन इंक्रीज फॉर पर्सनस टू मर्चेंट्स. यानी अगर आप किसी मर्चेंट के पास जा रहे हो एंड देन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो लिमिट हैव बीन चेंज. तो दिस लिमिट are effective from 15th of September 2025. And which type of UPI transactions are covered? So person to merchant transactions with verified merchants are covered. यानी जो verified merchants है उनके लिए person to merchant limits have been revised. Now कुछ लिमिट्स हम देखते हैं कि जो रिवाइज की हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर ट्रांजेक्शन लिमिट होता है और एक होता है 24 आवर एग्रीगेट लिमिट. पर ट्रांजेक्शन लिमिट इज हाउ मच ट्रांजेक्शन्स यू कैन डू पर अ ट्रांजेक्शन एंड 24 आवर एग्रीगेट लिमिट मतलब आप 24 आवर्स में टोटल कितना ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो विद द UPI. सो कैपिटल मार्केट्स एंड फॉर एवरीथिंग इट्स इंक्रीज. सो कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ट्रैवल, कलेक्शंस, इन सब की जो लिमिट है per transaction limit is now 5 lakh rupees and 24 hour aggregate limit is now 10 lakh rupees. Now you don't have to remember individually कि किसकी लिमिट है, just please have a rough idea कि किसकी क्या लिमिट है. So capital market, insurance, government e-marketplace, even for travel, the per transaction limit is 5 lakh rupees and 24 hour aggregate limit has been made 10 lakh rupees. Now if we talk about credit card bill payments, तो उसकी per transaction limit is 5 lakh rupees and 24 hour aggregate limit is 6 lakh rupees. If we talk about jewelry, तो jewelry की per transaction limit is 2 lakh rupees and 24 hour aggregate limit is 6 लाख रुपीज़. यानी अगर आप ज्वेलरी मर्चेंट्स के पास जाते हो तो विथ योर UPI आप पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड इन 24 आवर्स यू कैन ट्रांसफ़र 6 लाख रुपीज़. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस न्यूज़. So now here it is asking that what is the per transaction limit for capital market. So that is 5 lakh rupees and 24 hour aggregate limit is 10 lakh rupees. The 24 hour aggregate limit for credit card bill payment is 6 lakh rupees. So please have a rough idea कि किसकी क्या limit कर दी गई है. Now the next question is, by how much did outstanding gold loans grow year on year in June 2025? तो outstanding gold loans जो बढ़े हैं that is by 124%. So that's a huge increase. अगर हम देखें outstanding gold loans तो they have increased by 124%. In comparison credit card loans have increased just by 7% and personal loans just by 9%. But gold loans have increased by 124%. So this is a very huge increase. If we talk about loan to value, so loan size अगर हम बात करें, if it's below 2.5 lakh 85% loan to value is allowed. Between 2.5 lakh to 5 lakh 80% loan to value is allowed, and above 5 lakh rupees 75% loan to value is allowed. And this I am speaking in respect of gold loans. Right. Now the India's current account deficit in Q1 stood at what? So earlier I was speaking about current account deficit. So it is 0.2%, but in numbers it stands at $2.4 billion. So B is the right answer. You can remember this, that 0.2% is the current account deficit, that stands to be $2.4 billion.
India's manufacturing PMI in August 2024-25 stood at what? And who compiles this data? Who publishes this report? So all of this is very important. So remember this, that PMI is Purchasing Manager Index. So India's manufacturing PMI stood at 59.3, and who compiles this data? So this data is compiled by S&P Global, and who publishes PMI reports in India? So that is HSBC. Now let us see this, that HSBC has released HSBC India Manufacturing PMI report that's compiled by S&P Global. So it is 59.3, that number is important because it is 17-year high number that shows very strong momentum in Indian manufacturing. This Purchasing Manager Index is an economic indicator based on monthly surveys of purchasing managers, and the purpose is to track business activity, demand, supply chain conditions, employment and inventories. It is of different types, जैसे manufacturing होता है, services होता है, and composite is also there. Now how it is calculated? It is based on 400 manufacturing firms. So 400 firms it is calculated on. Please remember this. एक index होता है 0 to 100 का. If your score is more than 50, so it indicates growth या expansion. If it is equal to 50 यानी कोई change नहीं हुआ. If it is less than 50 यानी contraction is happening. August का data it is 59.3 and it is highest since 2008 यानी 17 years में it is very high, that is 59.3, and that is why it is important we are studying here. Next question is, who has been elected as new chairman of AMFI in September 2025? AMFI stands for Association of Mutual Funds in India. So new chairman has been elected as Sandeep Sikka, so C is the right answer, and vice chairman has been elected as Vishal Kapoor. Association of Mutual Fund in India was established in 1995 and headquarters are where? Headquarters are in Mumbai. Next question is on micrometer report. So the 54th edition of micrometer report has been released. This report was released by which organization? So the micrometer report was released by MFI in India, and as per this report, the total asset under management of microfinance institutions stood at 1,34,574 crore rupees. Now let us see this report. So microfinance industry network. So this is an SRO. SRO मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय RBI फॉर NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, एंड इट पब्लिशेस माइक्रोमीटर रिपोर्ट्स क्वार्टरली. तो इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 1,34,574 करोड़ रुपीज. इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ ट्रेंड देन इट इज डिक्रीज ऑफ 16.4% year on year as compared to June 2024. बट एज दिस रिपोर्ट इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट, तो अगर हम क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 5.4% डिक्रीज एज पर लास्ट क्वार्टर, दैट वाज मार्च 2025, यानी डिक्रीज हुआ है एसेट अंडर मैनेजमेंट का. इफ वी टॉक अबाउट टोटल डेट्स दैट हैज़ बीन रेज्ड, सो टोटल डेट्स रेज्ड में भी डिक्रीज हुआ है ऑफ 19.9% का. इन सोर्सेज बैंक इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ टेकिंग फंडिंग, दैट इज 81.9%. एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स वाइज हाईलाइट्स, सो इफ वी टॉक अबाउट टॉप स्टेट्स बाय पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग, दिस MCQ वी ऑल्सो वी हैव सीन इन स्टार्टिंग. जब हम स्टार्टिंग के MCQs देख रहे थे, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स तो आपको मिल जाएगा दैट बिहार में हाईएस्ट पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग स्टेट इज़ बिहार. एंड अगर हम अब एवरेज लोन पर अकाउंट की बात करें तो दैट इज़ तमिलनाडु. राइट नाउ आई होप वी हैव सीन द MCQs एज वेल. येस. Now the next question is, what percentage of total project cost was accounted for by greenfield projects in 24-25? यानी कितने ऐसे प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो हमने उन प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर लगाए हैं जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं. ग्रीनफील्ड यानी जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं. सो दिस इज 91.6%. एंड विच सेक्टर डोमिनेटेड प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट? तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशली पावर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अकाउंटेड फॉर हाइएस्ट शेयर इन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट? सो हाइएस्ट शेयर जिस स्टेट का था इन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, सो दैट इज Gujarat. Equity mutual fund share in gross household saving has also grew from 0.9% in 2011-12 to now 6% in 2022-23.
क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल सेविंग्स टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। हेयर वी हैव सीन द एमसीक्यू जहाँ पे लिखा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, दे हैव सीन अ वेरी हाई ग्रोथ, 0.9% से 6%। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। नाउ शिफ्ट इज हैपनिंग, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर ग्रोइंग बिकॉज retail investors are moving away from fixed deposits and other traditional instruments, and now they are investing in equity mutual funds as well. Right now, assets under management have also increased, and if we see SIP trends, that is also increasing, and monthly systematic investment plan, that is SIP inflows, have crossed 27,000 crores in June 2025 even during market volatility. स्मॉल बिजनेसेस ये हम देख चुके हैं, इफ़ इट इज़ लेस देन 5 करोड़ एज पर दिस रिपोर्ट, इट इज़ क्रेडिट एक्सपोजर. So now that's it for the day. I hope you liked the class. I'll meet you all in part 2 of banking and finance, and it's already 44-45 minutes, and I think it's enough for part 1 ताकि हम part 2 में बाकी की चीज़ें कंटिन्यू कर सकें. If you did like the session, please like, share and comment. For PDFs, join our Telegram channel, and for more updates also join our Telegram channel. If you have any doubt, you can ask in the comment section and or in the Telegram discussion channel. And if you are willing me to make video on any other topic, you can ask me to do so as well. And thank you so much for watching.